Okay, yes. So we were discussing this and I gave you two examples. One of them was an is root n. So this was a divergent sequence. We checked that graphically. And the other one was an is 1 by n. So this was example of a convergent sequence because we saw that all of the terms of the sequence were approaching towards 0. We saw that graphically. And then if you look at one more example, minus 1 raised to power n plus 1, 1 by n. So let's understand whether this sequence will be convergent or divergent according to the rule जैसे हमने example 1 और 2 discuss किया है. Yeah, this is actually example number 4. I give you one more example of constant sequence. So if a sequence is constant, so it is always convergent, right? So now we are going to look at this example. Okay, wait a minute. Are you not able to see the whiteboard? Let me see that. Wait a minute. Let me do the sharing again. Yeah, I have shared the whiteboard. Let me start again with the example. So we were doing this example. An is minus 1 raised to power n plus 1 by n. So if you look at that in a similar way, so somewhere say you have when n equals to 1, you substitute. The first term of the sequence is going to be minus 1 raised to power 2 by 1, which is 1 actually. So say this is the first term of the sequence. Then when n equals to 2, so you get A2. A2 is minus 1 raised to power 3 by 2, and which is minus 1 by 2. So say here we have say 0, say here we have minus 1, then what is going to happen here? Where is the next term? So the first term you marked at 1. This is A1. The second term is negative. So this is lying on this side of 0 and this is half, minus half. So you can see this is going to be A2, which is minus half. And then when you put n equals to 3, so the third term is going to be minus 1 raised to power 4 because this is n plus 1 by 3, which is 1 by 3. So this is 1 by 3, but this is going towards this side of the 0. But as you can see, if you compare the distances, so first term was the 1 unit away from 0, the second term was half unit away, the third term is 1 by 3 units away. So although the terms are moving frequently, means alternatively on the opposite sides of 0, obviously because of the presence of this, the terms are alternatively negative positive. So ek term positive, ugly negative. So you will see the oscillations around 0. But if you even compute more terms, say next term, so that term is going to be minus 1 by 4. So minus 1 by 4 will be even closer to that, and n equals to 5 will be plus 1 by 5. So this will be here. So the terms are becoming closer and closer to 0. So therefore, this sequence also converges to 0. So that means by looking at this minus 1 raised to power n plus 1, or if even it would have been minus 1 raised to power n by n, by looking at this, it appears to us कि ये sequence oscillate करेगा between negatives and positive values, right? Which is true. But ये still convergent है because oscillate होने के बावजूद the terms are becoming closer and closer to 0. जो हमारा एक्चुअल मीनिंग है कन्वर्जेंस का, कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस वही होता है जिसमें कोई एक टर्म मिल जाए, कोई एक नंबर मिल जाए कि सारे सीक्वेंस के टर्म्स उसके अराउंड कन्वर्ज कर जाए. So this will also converge to 0. So this is also an example of a convergent sequence, right? So let's move now. I hope these 4 examples were considered. So meanwhile, you hold your doubts. I'll answer all your doubts at the end of the lecture if you have regarding specific questions. But these 4 questions make us clear about the meaning of convergence and divergence. And last time you asked me about oscillatory, so that I would say कि हमारे पास 2 ही तरह के सीक्वेंस है, या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है.
So if you will feel a sequence is oscillatory, so that will also be considered in the category of divergent. It is just हम ज़्यादा terminology confusing create नहीं करना चाहते हैं, हम oscillatory को भी divergent की ही category में मान लेंगे, because we are only interested in identifying the convergent sequences. तो जो convergent नहीं है बस वो divergent है, और वो divergent किसी भी reason से हो सकता है, वो oscillatory भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. So we have only these two characterizations, either the sequence is convergent or the sequence is divergent. So now we are moving towards the next thing. So the next definition which we are going to look at is of a subsequence. So what is a subsequence? So it's clear from the name, जैसे subset होता है, एक set होता है, फिर हम उसका subset बनाते हैं. जैसे ये एक set है 1 2 3 4. So 2 and 4, this is a subset of it, right? So this is a subset of 1 2 3 4. So similarly sequences may be subsequence होते हैं. So I'll start with an example. For example, your sequence is say n. So the इसकी terms क्या होंगी 1 2 3 4 5 and so on, and say take another sequence bn and say this is 2n. So the terms of this sequence will be 2 4 6 8 and so on. So as you can see, ये जो 2 4 6 8 हैं ये इस sequence में भी आ रही हैं. So all of these terms are originally a part of an and they are coming in the same order. तो जैसे 2 4 6 8 यहाँ पे भी उसी ऑर्डर में आ रहे हैं और यहाँ पे भी उसी ऑर्डर में आ रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है हमारे पास. सो इन दिस केस आई वुड से दिस bn is a subsequence of my original sequence an, right? So the pattern, the order should be same in which they appear in the original sequence, but these are some of the terms. So if you want to go by the definition, so the definition says if the terms of a sequence appear, you will find this definition in the book, so no need to write that, just understand it. If the terms of a sequence appear in another sequence in the same order, then we call the given sequence a subsequence of letter. Letter means जो बाद में है. तो पहले ये सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स दूसरे सीक्वेंस में अपीयर हो रही है सेम टर्म में, तो वी विल से दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ द लेटर. सो वी कैन से ये 2 4 6 8 सारे इसमें प्रेजेंट हैं, so bn is a subsequence of an. उसमें एक्स्ट्रा टर्म्स भी हो सकते हैं, राइट? So I hope the definition of subsequence is clear. It is similar to a subset. कि सबसेट में बस ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि सेट में हम ऑर्डर से करेक्टराइज नहीं करते हैं. अगर मैं इसको 4, 2 भी लिखूं, सो दिस विल मीन द सेम एज अ सेट, क्योंकि सेट में हम सिर्फ आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट है. सेट में वो वाला लॉजिक नहीं होता है, बट सीक्वेंस में द ऑर्डर इज मोर इम्पोर्टेंट. So therefore the name is subsequence, not a subset. Moreover, ये भी हम infinite के लिए ही define कर रहे हैं. So this is the definition of subsequence, and I have also given you the example. You can have more examples, like say I give you one example. Say an is -1 raised to power n, right? If you write the terms of it, so the terms will be -1 1, -1 1, -1 1, and so on. So these will be alternatively -1 and +1. Now if I give you another sequence, say bn is 1, so उसकी सारी terms 1 है, ये constant sequence है, so obviously this will be 1, 1 and so on. So you can clearly say this bn is a subsequence of an, क्योंकि bn की सारी terms an में आ रही हैं. So this is kind of a very simple and easier example. Similarly, if I give you another constant sequence cn, which is -1, so -1, -1, -1. So then Cn is a, we can say, subsequence of An also. तो ये भी An original का क्या है, subsequence है. So with this you can create plenty of examples and figure out when a subsequence is there of the original sequence. So now the question which arises, that why we are studying this.
an is -1 raised to power n. So these are the terms, and b, this is bn, this is cn. So the question we need to answer here is why we are studying subsequences. If I remember last time I told you that we are studying only, we are answering only one fundamental question in this whole chapter, and that is whether a sequence is convergent or not. And similar question will be answered for the series. So that means this subsequence has something to do with the convergence. So sequence और subsequence की convergence में कुछ connection होगा उसकी, ताकि हम कुछ conclusion निकाल पाए sequence की convergence के बारे में. Right? So let me give you the statement. So that is actually a theorem, but because we are not doing the proofs of those theorems, these are just as a results you need to remember. So this is result number 1. It says that all the subsequences of a sequence of a convergent sequence also converge and to the same limit, right? So this result is saying कि अगर आपके पास एक convergent sequence है, you are given a sequence which is convergent, तो उसके सारे subsequences, सारे means, so we need to first look at कितने होंगे, एक sequence से कितने subsequences create कर सकते हो आप, infinitely many. We can create infinitely many subsequences of a given sequence, क्योंकि आपके original sequence में infinitely many terms हैं, तो आप infinitely many subsequences create कर सकते हो. So this result is very strong, which is saying कि अगर original sequence convergent है तो उसके सारे infinitely many subsequences भी क्या होंगे, convergent होंगे. And additionally it is telling you उनकी limit भी क्या होगी, same. Means अगर original sequence जो है, अगर आपका कोई sequence है an, suppose that converges to L, suppose L is the limit, then Bn also converges to L, where what is Bn? Bn is a subsequence of An, and this is true for all subsequences of An कि उसके सारे subsequences क्या होंगे, converge करेंगे, right? So this is the simple statement which is telling me कि अगर sequence convergent है तो उसके सारे subsequences converge करेंगे और उनकी limit भी same होगी, जो sequence की limit है वही subsequence की होगी, right? But now the question arises, इस result का हम use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि remember एक sequence convergent है या नहीं है, ये तो हमारा question है. हमारे पास अगर ऑलरेडी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हमें सबसीक्वेंसेस को देखने की जरूरत नहीं है. गिवन द क्वेश्चन ओनली, हम तो उल्टा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है. सो दिस रिजल्ट विल नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन दिस फॉर्म, रादर हमें इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा so that the same information can be used to identify whether a sequence is convergent or not. I'll explain, I'll repeat what I said कि ऑलरेडी अगर हमें पता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ठीक है, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि उसके सारे सबसीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट इंफॉर्मेशन. हम उल्टे इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, मींस वी वांट सम रिजल्ट जो हमें बता दे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा. सो द सेम रिजल्ट वी विल बी रीराइटिंग इन अदर फॉर्म. सो व्हाट विल बी दैट? So this you can say is result 2, but basically this is just a rewriting of result 1. So let me write first and then I'll explain. So this says if any subsequence of a sequence diverges, or if two subsequences of a sequence converge to different limits, then the sequence is also
डाइवर्जेंट, राइट। तो हम उस सेम इंफॉर्मेशन को रिजल्ट नंबर 1 को रिजल्ट 2 की फॉर्म में क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं टू इम्प्लाई कि एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होगा। इससे कन्वर्जेंट हम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज कन्वर्जेंट होने के लिए हमें इनफाइनाइटली मेनी सीक्वेंसेस की, सब सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस चाहिए, बट वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म। सी, आपका रिजल्ट 1 क्या कह रहा है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो दिस विल इम्प्लाई ऑल सब सीक्वेंसेस भी क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे टू द सेम लिमिट, सेम लिमिट जो सीक्वेंस की लिमिट है, से L, सो दिस ऑल्सो कन्वर्ज टू L। नाउ आई एम सेइंग ठीक है कि अगर मुझे एक भी सब सीक्वेंस यहां से मिल गया, इफ एनी सिंगल, ऑल में से एक भी मुझे डाइवर्जेंट मिल गया, तो दैट विल ऑब्वियसली मीन कि ओरिजिनल सीक्वेंस भी क्या है, डाइवर्जेंट। क्योंकि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता तो उसके सारे सब सीक्वेंसेस को भी कन्वर्जेंट ही होना चाहिए था एज पर द रिजल्ट 1। तो दैट मीन्स मुझे एक भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट दिख गया, किसी सीक्वेंस का कोई भी एक सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो दैट मीन्स वो सीक्वेंस ही क्या है, डाइवर्जेंट है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। एंड अनदर इज, अगर उसके दो सब सीक्वेंसेस मुझे मिल गए जो कन्वर्जेंट हैं बट उनकी लिमिट अलग है, that means ये वाली condition violate हो जाए, so that way also we can imply the sequence is divergent। क्योंकि अगर वो sequence convergent होता तो उसके सब sequence की limit same होनी चाहिए थी। तो दो चीजें हैं, दो informations हैं, या तो उसका एक सब sequence मिल जाए जो है ही divergent, तब हम imply कर लेंगे कि हमारा sequence divergent है, या फिर दो ऐसे सब sequences हमें दिख जाएं जो convergent तो हैं बट उनकी लिमिट डिफरेंट है, अलग है, फिर भी हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या है, ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन अटेम्प्ट। अगर हमें सब सीक्वेंसेस के बारे में पता है तो हम सीक्वेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, नॉट एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद दिस टेक्निक। यस श्रेया। Ma'am, how do we find the limit of the convergent sequence? Yes, we will come to that. We will come to that. We'll do questions and then आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आई विल टेक वन एग्जांपल हियर टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट नंबर 2। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर सीक्वेंस, ये मैंने अभी डिस्कस किया था, -1 raised to power n, राइट। So you tell me whether this sequence is convergent or divergent. Okay, I will allow the, wait a minute. You can write in the chat box and let me know whether this sequence is convergent or divergent. This is your divergent. Even if somebody of you is asking, giving me the answer oscillatory, then also I will say include it in the category of divergent, because that's what I just told you. So yeah, this is a divergent sequence जो हमने original मतलब समझा है convergence divergence का, वहां से भी आप इसको समझ सकते हो। अब इसको हम सीक्वेंस सब सीक्वेंस वाले तरीके से समझेंगे, कि जैसे अभी I gave you the example कि इसके दो सब सीक्वेंसेस हैं, one of them is this, one of them is this, 1 1 1 means at least you are able to figure out two subsequences। तो ये वाला भी क्या होगा, convergent bn। कन्वर्जेंट क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। और cn कन्वर्जेंट क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट सब सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। सो bn और cn को इंडिविजुअली देखोगे, ये दोनों इस ओरिजिनल सीक्वेंस के सब सीक्वेंसेस हैं, तो मुझे दो ऐसे सब सीक्वेंसेस मिल गए हैं जो क्या है, कन्वर्जेंट। तो नाउ विल सी वो सेम लिमिट को जा रहे हैं कि डिफरेंट लिमिट को। सो द फर्स्ट वन bn, दिस इज कन्वर्जिंग टू 1, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करता है, मींस जो वो वैल्यूज हैं वो ही उसकी लिमिट होती है, क्योंकि वो वहां से मूव ही नहीं कर रहा है। तो 1 1 1 1 1 is converging to 1 and -1 -1 -1, this sequence is converging to -1। So that means I have got two convergent subsequences, but they both of them are converging to different limits,
Since they are converging to different limits, therefore this an is divergent. राइट तो ये एग्जांपल सिर्फ लिया है आपको रिजल्ट नंबर 2 समझाने के लिए कि ये आप किसी भी सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऐसे सब सीक्वेंसेस मिलने चाहिए जो कन्वर्ज कर रहे हैं डिफरेंट लिमिट्स को, फिर ही आप इम्प्लाई कर पाओगे। तो ये जो सब सीक्वेंसेस वाली टेक्निक है ये बहुत ज्यादा जनरल नहीं है, बहुत ज्यादा हैंडी नहीं है डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस के लिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता है कि हमें बहुत आसानी से ऐसे दिख जाए सब सीक्वेंसेस। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आउट ऑफ द इन्फिनिटली मेनी सब सीक्वेंसेस इट्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट वेदर दे विल बी कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट और डिफरेंट लिमिट। तो ये रिजल्ट सिर्फ उन एग्जाम्पल्स के लिए जहाँ पे हमें इजिली दिख जाए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, या फिर स्पेसिफिकली कोई हिंट मिले हमें वहां से। So this technique is also not generalizable to every question. So what I will tell, what we have discussed so far, कि एक तो तरीका है जो हमने अंडरस्टैंड किया था मीनिंग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का ग्राफिकली रियल लाइन पे ड्रॉ करके। दूसरा हमने टेक्निक देखा है सबसीक्वेंस वाला, बट आई हैव टोल्ड यू द लिमिटेशंस ऑफ बोथ ऑफ देम कि दे आर नॉट द जनरल टेक्निक्स जिससे हम फाइनल आंसर पे पहुंच जाएं। ये किसी क्वेश्चन में हमें इजीली मिल जाएगा बट कई क्वेश्चंस पे नहीं दिखेगा। सो therefore we need another solid technique which will work for every sequence, कि हमें डेफिनेट एक आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा फाइनल, whether a sequence is convergent or divergent. So that method is, उसमें हमें लिमिट निकालना होता है। हम सीधा लिमिट निकालते हैं और बता देते हैं कि whether the sequence is convergent or divergent. So before going to that method, we need to look at particular type of sequences, bounded and non-decreasing, right? So वो इसके आगे आएगा वो मेथड। तो द लास्ट मेथड जो लिमिट वाली टेक्निक है, सो लिमिट वाली टेक्निक से जो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी कन्वर्जेंट के लिए CGT, डाइवर्जेंट के लिए DIVGT। सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस। ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ये कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, ये बस हम लिखने के लिए लिख देते हैं। So these two we have seen, but now we'll be first looking at this third, that what do we mean by bounded and non-decreasing sequence. So let me start with this. So firstly we are going to define what is a non-decreasing sequence. So this is the definition which I need to give you. So write down, means you can see the definition. A sequence an, that's the notation of the sequence, we know curly braces. A sequence an is said to be non-decreasing if an is less than equals to an plus 1 for all n. So that's the definition. एक सीक्वेंस को हम नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब बोलेंगे? इफ an is less than equal to an plus 1 for all n. So ये an क्या डिनोट कर रहा है? तो ये an उसके डिनोट कर रहा है nth टर्म, और an plus 1 डिनोट कर रहा है उसकी n plus 1th टर्म। तो अगर nth टर्म और n plus 1th टर्म ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, सो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग है। तो एक्चुअली नॉन डिक्रीजिंग इज नथिंग बट इंक्रीजिंग। यू नो, जैसे हम कहते हैं कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क है? तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दे मीन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बट अगर हम नॉन नेगेटिव लिखते हैं सो दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दैट्स द डिफरेंस हियर। yes, we can have doubt. Madhur, you can speak up. मैम वो जो आपने सिंबल लगाया है an+1 के आगे, वो कौन सा सिंबल है? हाँ, I'll explain. मैं बता दूँ। Yeah, so this is for all n. For all का सिंबल होता है ये ऐसे, for all. For all मतलब means obviously it's clear for every n, कि n की कोई भी वैल्यू डालूं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी n की सभी वैल्यूज के लिए, फिर हम वो उस सीक्वेंस को बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। बट सिंस n कैन टेक इनफिनिट वैल्यूज, वी नो दैट n तो नेचुरल नंबर है, तो मैनुअली सारी वैल्यूज डाल के नहीं चेक कर सकते हैं, हमें इसको
जनरली चेक करना होता है। जैसे आई गिव यू एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है चेक करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। सो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट फर्स्टली you should be clear with the meaning of non-decreasing. Yeah, I was explaining you कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में ये डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव नंबर्स आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, बट अगर आपको पॉजिटिव में जीरो को भी इंक्लूड करना है इक्वालिटी, तो हम उनको नॉन नेगेटिव बोलते हैं, मींस नेगेटिव को छोड़ के सब कुछ। तो सेम इज हियर, अगर मैं इंक्रीजिंग लिखूं, कोई चीज इंक्रीजिंग है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि नेक्स्ट टर्म पुरानी टर्म से, जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से स्ट्रिक्टली बड़ी है, राइट? ऐसे भी लिख सकते हो an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an। बट अगर मैं नॉन डिक्रीजिंग लिख रही हूँ, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि उसमें इक्वालिटी भी अलाउड है, कि वो स्ट्रिक्टली बड़ी भी हो सकती है बट सेम भी हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट शुड नॉट डिक्रीज, आइदर इट शुड रिमेन सेम, इक्वालिटी इज अलाउड, और इट शुड गेट बिगर। तो नॉन डिक्रीजिंग में इक्वालिटी भी अलाउड होती है। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं तो उसमें इक्वालिटी नहीं होता है, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको, तो वो इतना ही डिफरेंस है कि उसमें इक्वालिटी अलाउड है, इसलिए उसको नॉन डिक्रीजिंग बोला जाता है, राइट? So now I'll give you examples of this so that it will be clear to you कि non decreasing हमारे पास sequence की examples क्या हैं। So the first example is बहुत सारे examples हैं, आप खुद से भी create कर सकते हो। Say 1, 2, 3 and so on. an is n. So this an is equal to n, means this if you write in the notation of sequence, जब आपको लिखना है ये sequence है तो put the curly braces around. So this is a clearly non-decreasing sequence, क्योंकि terms जो हैं बढ़ती जा रही हैं। आप इसकी second term देखो, it is greater than the first term. Third term is greater than second term. Fourth term is greater than third term. So next term जो है n plus 1th should be greater than the nth term. And if you are sure about it कि यही pattern रहेगा, so I can clearly declare here कि ये एक non-decreasing sequence है, right? So this is one example of non-decreasing sequence. And another example you can have is, say कोई भी example ले लो, n square ले लो, an is n square, so 1, 4, 9, 16. So the terms are continuously increasing, right? So जो n plus 1th term है वो greater है nth term से, so therefore we know that this is also a non-decreasing sequence. So ये second example है. Third example which I am giving you is constant sequence. कांस्टेंट सीक्वेंस देखो, वैसे बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है कन्वर्जेंट ही होता है, ये हमने याद ही कर लिया है क्योंकि वो बेसिक कन्वर्जेंस की मीनिंग को सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक्चुअल में कांस्टेंट सीक्वेंस कभी भी एज अ क्वेश्चन आपके सामने पोज नहीं होगा कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, मींस उसके लिए कुछ भी मैथमेटिकली जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। But still, if we want to see whether the constant sequence comes in the category of non-decreasing or not, so you can see constant sequence be like say 3, 3, 3, 3, 3. So इसकी terms क्या हो रही हैं? बड़ी नहीं हो रही हैं, but they are remaining same. So you see the equality was also allowed. Equal भी रह सकती हैं जो terms है. So ये जो constant sequence है, इसमें सारी टर्म्स जो हैं n plus 1th term is exactly same as nth term for all n, therefore constant sequence is also coming under the category of a non-decreasing sequence. कुछ एग्जांपल्स हमेशा हमें ट्रिवियल एग्जांपल्स जरूर डिस्कस करनी चाहिए किसी भी डेफिनेशन के साथ कि स्ट्रिक्टली तो हमें दिख रही हैं बट अगर सेम रहेंगी तो किस तरह का सीक्वेंस होगा, so that can be a non-decreasing sequence. So I just hope the meaning of non-decreasing sequence is clear to you. So now we are going to do, I'm going to tell you the technique. कि suppose एक random मैं आपके सामने sequence रख दूं, तो आपको ऐसे लिख के नहीं identify करना है कि non-decreasing है कि नहीं है. You need to do some calculation. Okay, let me take doubt from Abir. Ma'am? Yes.
Ma'am, you have said that non-decreasing function an plus 1 is greater than equal to an. Yes. But how an is equal to an square is equal to sign and an plus 1 is equal to nth term? We have to satisfy both the conditions for a non-decreasing function, right? और होता है लेस देन और इक्वल टू, या लेस है या इक्वल है, और होता है ये जब भी हम ये लिखते हैं ना तो ये एंड नहीं होता है, इसमें या आइदर लेस है या इट्स और, दोनों नहीं सेटिस्फाई करानी है, एक ही सेटिस्फाई हो जाए तो वी विल टेक इट. ओके मैम. ओके, यस हर्ष. Harsh, can you explain in the case of minus 1 raised to power n? Minus 1 raised to power n means you want to ask decreasing, non-decreasing, or yes. Okay, I'll take that. So obviously if you take minus 1 raised to power n, so this is not non-decreasing क्योंकि ये इसके टर्म्स देखो क्या है, -1 1 -1 1 -1 1. so अगर आप इन ये कॉम्बिनेशन देखते हो तो ये वाली टर्म तो इससे बड़ी है, बट इमीडिएटली नेक्स्ट टर्म स्मॉल हो जाएगी, राइट? हमारा जो रिलेशन है वो ये है कि an plus 1 should be greater than equals to an. ये फॉर ऑल n होना चाहिए. तो ये ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, अगर आप इसको एज अ फंक्शन देखोगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या फिर ऐसा ग्राफ बनना चाहिए कि कांस्टेंट भी हो सकता है बट इट कैन नॉट बी लाइक दिस. और ये -1 to 1 तो आपको पता है इट्स लाइक दिस, it's fluctuating between two values 1 -1 1 -1. so this kind of behavior, if it is there in your function, so this is clearly not a non-decreasing sequence. so non-decreasing means या constant हो जाए, this is allowed, या फिर increase हो जाए, strictly increase होता ही रहे, this is allowed, this is also not allowed. ये decreasing में आ जाएगा, means ये किसी में भी नहीं आएगा, ये पहले increase हुआ फिर decrease हुआ, तो ये भी qualify नहीं करेगा, और ये -1 raised to power n भी क्वालिफाई नहीं करेगा नॉन डिक्रीजिंग की डेफिनेशन को. Okay. Yeah, so I hope I just made my point. So now I'll tell you the general technique. Rest of the people, I'll take your doubts later on. I hope the doubts will be clear with the example. So जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक एग्जाम्पल पोज किया, अब आपको या तो ग्राफिकली देखना पड़ा या उसके टर्म्स को लिखना पड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो टर्म सीक्वेंस जो है नॉन डिक्रीजिंग है या नहीं है. सो आई विल टेल यू अ जनरल टेक्निक नाउ. जनरल टेक्निक मींस यही जो डेफिनेशन है उसी से हम चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल हम यही वाले एग्जांपल ले लेते हैं n स्क्वायर की. यू टेक दिस एग्जांपल. सो मैथमेटिकली एक्चुअल में क्वेश्चंस में आपको कैसे करना है, दैट टेक्निक व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. सो व्हाट यू डू नॉट राइट द टर्म्स मत लिखो, just change n to n plus 1. Remember definition is an is less than equals to an plus 1 for all n, right? This is equivalent to say an plus 1 is greater than equals to an for all n, which is further equivalent to an plus 1 minus an is greater than equals to 0 for all n. तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे. तो आप इसी को मान सकते हो अपने नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन. वो एक्चुअल में ये है बट दिस इज सेम थिंग. उसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. तो हम ये वाली कंडीशन से चेक करेंगे. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हम बोल देंगे वो सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग है, नहीं हुई तो बोल देंगे कि नहीं है. सो दिस इज द क्वेश्चन वी आर आंसरिंग, दैट चेक वेदर द सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन होगा, वी हैव टू चेक कि क्या वो नॉन डिक्रीजिंग है कि नहीं है. So an is n square, an plus 1, what will be an plus 1? You just change to n plus 1. General term आपको हमेशा given होती है, आप n को n plus 1 change कर दो, you will get n plus 1 का square. And now you subtract these two, because according to this मुझे subtract करना है ताकि मैं ये condition verify कर सकूं. So I will subtract these two. So first thing is how to go from an to n plus 1, just change n to n plus 1. And then you just subtract these two. So when I'm subtracting these two, it's very easy to follow this calculation. So mera n square gets cancelled. I will be left with 1 plus 2n, which is obviously greater than equals to 0 for all n.
क्योंकि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये आपको नहीं भूलना है. सो नेचुरल नंबर है तो वो पॉजिटिव है. सो 1 + 2 times n is obviously always greater than equals to 0. You can straight away write that. Nobody needs a demanding a justification of this. ये क्लियर है, सबको अंडरस्टैंडेबल है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा. तो इट इम्प्लाइज हमारा an जो है, मीन्स ये जो n स्क्वायर है, ये क्या है, एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. सो दिस इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ चेकिंग इट. Right. Please lower your hands, those who have raised their hands. I will take up your doubts in the end. Yeah, thank you. So this is the example. I hope this example is clear. तो ये general technique है, आपको किसी भी example पे यही technique लगानी है. If this question is asked, check whether a given sequence is non-decreasing or not. So the same technique you can apply on, say, this example, the example which you just asked me. Suppose हम इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, वैसे हमें पता है ये नहीं है. Let's try. So you change n to n plus 1. You will be getting -1 raised to power n plus 1. n है जहाँ पे, बस उसको n plus 1 से रिप्लेस कर देना है. And then जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे an plus 1 minus an को, what you will get? -1 raised to power n plus 1 minus -1 raised to power n, right? अब इसमें से आप इसको कैसे हैंडल करना चाहते हो, यू कैन से, सपोज मैंने -1 raised to power n क्या ले लिया कॉमन, तो आई विल बी लेफ्ट विथ -1 minus -1, sorry, -1 raised to power, sorry, this will be 1. If I take this common, so -1 raised to power n is common. So यहाँ एक -1 बचेगा, एक ये माइनस है हमारे पास, और ये 1 रहेगा. So this will be -2 times -1 raised to power n. The difference between the terms. Now ना तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये ग्रेटर देन 0 है, ना मैं ये बता सकती हूँ कि ये लेस देन 0 है, बिकॉज ये n के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर तो n आपका क्या है, even. If n is even, तो in that case ये वाली जो term है, this will be negative. इस केस में if n is even, and if n is odd, then in that case this term is positive. So that means for all n जो satisfy होना चाहिए, ताकि for all n उसका साइन हमें greater than 0 चाहिए, बट वो सिर्फ odd n के लिए greater than 0 है, बाकियों के लिए तो वो less than 0 है, और equal to 0 वो कभी नहीं हो सकता है. So that means this is clearly not non-decreasing sequence, क्योंकि इसने हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया. सो दैट मीन्स आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं, लास्ट में जाके जो भी आएगा वहां से इंप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे बहुत क्लियर था कि ये हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो वी कुड इमीडिएटली इंप्लाई कि ये नॉन डिक्रीजिंग है. यहाँ पे ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं है, वो वैसे भी हमें पता है, बट मैथमेटिकली जस्टिफाई करना हो तो उसको आप ऐसे लिखोगे कि क्लियरली दिस चेंजेस इट्स साइन एज पर n is odd or even, therefore we cannot have the same sign satisfaction. So therefore this is not a non-decreasing sequence. So you can have more examples. हम इसके और भी examples करेंगे जब हम specific questions करेंगे exactly जहाँ पे हमें convergence divergence से इसको connect करना है non-decreasing को. So more examples we will discuss there. Yeah, so I am going to give you another definition which is bounded. क्योंकि जो एक हमारी थ्योरम है वो नॉन डिक्रीजिंग और बाउंडेड के कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन करते हैं. सो हमें क्लियर हो गया कि नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन से होते हैं. So let me give you the definition of bounded, and specifically I am giving you the definition of bounded from above. So this says a sequence an is bounded from above if there exists, ये symbol है there exist का, if there exists a number capital M such that an is less than equals to m for all n, and this m is called upper bound of the sequence.
So this definition is saying कि आपका sequence bounded from above है कि नहीं है. तो बाउंडेड फ्रॉम अबव का मतलब है मींस उसकी मैग्नीट्यूड, सीक्वेंस के टर्म्स के ऊपर एक अपर कैप लगा है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस नंबर से क्या होंगी, छोटी होंगी. तो इफ यू आर एबल टू फाइंड अ नंबर, अगर हमें एक भी रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस नंबर से छोटी हैं फॉर ऑल एन, अगेन फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम उस नंबर को बोलेंगे कि वो अपर बाउंड है सीक्वेंस का, और सीक्वेंस को बोलेंगे दैट इज अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड फ्रॉम अबव. Bounded from above means graphically if you want to imagine this, so it will be something like that. तो ये bounded from above हो गया कि एक वैल्यू मिल गई हमें टॉप पे, बाकी सारी टर्म्स उस वैल्यू के नीचे लाई कर रही हैं, उससे कम है, लेस देन इक्वल टू दैट है. So this is an graph of a bounded from above sequence, right? Or it can also be a constant sequence, क्योंकि जो constant sequence है वो obviously bounded from above है, क्योंकि उसकी तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, सेम ही रह रही है. तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल आई गिव यू दिस एग्जांपल 1/n. सो इसकी सारी टर्म्स जो हैं इस सीक्वेंस की 1/n, सो 1/n वी नो इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल n, क्योंकि n 1 डालोगे तब उसकी वैल्यू 1 है, n इक्वल्स टू 1 पे. ठीक है, हम इसको इक्वलिटी इज ऑल्सो अलाउड. When n is 1, a1 is 1. When n is 2, a2 is half. तो इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो 1 से छोटी ही मिलेंगी, आपको बड़ी नहीं मिलेंगी. सो 1/n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1. तो यही था कि हमें कैपिटल M अगर एक ऐसा मिल जाए जो यहाँ पे मिल गया है दिस 1, अगर एक बाउंड आपको ऐसा दिख रहा है कि बाकी सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, सो दैट सीक्वेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड फ्रॉम अबव sequence, right? So I'll stop here and I will ask